Paper 1, question number 57. The problem is, let the eccentricity of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 with the reciprocal of the given ellipse. Equation of ellipse is x square plus 4y square equal to 4. If the hyperbola is passing through the focus of ellipse, then find out the equation of the hyperbola and focus of hyperbola. Now, so what is the given data? The problem number 57. सबसे पहले हम ellipse के लिए solve कर रहे हैं. For ellipse, what is the equation of ellipse? This x square plus 4y square is equal to 4. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो ये वैल्यूज क्या होगी? डेट वैल्यूज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. डेट वैल्यूज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर? दिस इज 1. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर? डेट वैल्यूज इक्वल टू 4. तो डेट वैल्यूज इज इक्वल टू 3 बाय 4. So what is the values of eccentricity? E is equal to root over 3 divided by 2. Now focus of ellipse. Focus of ellipse is given by plus minus a comma 0. Put the values of a. The values of a equal to 2. And what is the eccentricity? E is equal to root over 3 divided by 2. अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डेट वैल्यूज इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3 कॉमा 0. फाइन. नाउ for hyperbola, equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. प्रॉब्लम में गिवन है द hyperbola is passing through the focus of the ellipse. इसका मतलब ये फोकस के कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई करें पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3. तो डेट वैल्यू इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर. डेट वैल्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन a स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ y? The values of y is equal to 0. So minus 0 is equal to 1. Okay. So what is the values of a square? The a square is equal to 3. Okay. Now problem में given है eccentricity of the hyperbola is the reciprocal of the ellipse. तो eccentricity E किसके लिए? For hyperbola is equal to reciprocal of the eccentricity of the ellipse. It means that value is equal to 2 upon root over 3. Fine. Okay. Now we know that the values of b square is equal to a square e square minus 1 for the hyperbola. So what is the values of b square? The b square is equal to a square, that value is equal to 3. E square, this is 4 divided by 3 minus 1, and that value is equal to 3 multiplied with 1 by 3 is equal to 1. So what is the values of b square? B square is equal to 1. Fine. Now the equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Put the values of a square. What are the values of a square? The values of a square equal to 3. And what are the values of b square? That values is equal to 1. Now the equation is x square upon 3 minus y square upon 1 is equal to 1. Fine. This is the first answer. And the focus is plus minus a comma 0. Okay. So what is the values of a? The values of a is equal to root over 3. And what is the eccentricity? Eccentricity is equal to 2 upon root over 3. Put the values of a and e. That value is equal to plus minus. What are the values of a? That value is equal to root over 3 multiplied with 2 upon root over 3 comma 0. And that value is equal to plus minus 2 comma 0 is the answer. Complete it.